but the only option court, and it's a smart move, I will say, what Mamta ma'am and Anubha ma'am had decided to go to High Court, not to the Supreme Court, because time was very less. If we have tried for Supreme Court, we could have take, maybe the hearing must be after NEET, so that was of no use. So High Court, because this is under CGI, Chief Justice, so that's why it got listed, and hopefully I think tomorrow there will be a hearing. Whatever it will be tomorrow. There will be a final decision. So we hope for the best. Actually, we have to be positive, but equally we have to focus more on the studies only, because hardly any time left for NEET, and just that this will be a final try, we can say, and I can say we are positive. Maybe things somehow something come out from this. Maybe some midway. Let's see. Thank you, Dr. Mahindra. Today, in fact, I met Sukhpal Bhai at around 9:30 or quarter to 10 today morning, and we have just reached home. So we were trying other options as well. Today, you must have seen in my tweet that we submitted a memorandum. Now, a lot of people asked me what was the need to submit a memorandum to the Education Ministry today, because since we've gone to the court and we've already submitted so many memorandums earlier also. The reason being, in earlier memorandums, the latest situation of flood was not there. You must have noticed 1 week before, whoever submitted, even we also submitted quite a few memorandums to Education Ministry and NT also. There, that time the situation was the floods were mostly in northeast, right? But now there are so many states which are having this either torrential rains or the problem of floods, and there are so many students who are sending messages, videos, news media is covering it. So the fact of the matter is, this situation has become quite heavy for most of the students, and they are basically wondering who will be given the benefit of not being able to reach the examination center, or will the prayer be only for the students who are suffering from the reason being train cancellation or the floods. So basically, once Sukhpal Bhai comes, he'll update about the prayer. But let me assure you, the prayer is not about just the people who are suffering because of floods. It is because, for the very simple reason, had we asked or had we prayed that let's suppose only the students who are suffering because of floods, they should be given the benefit of postponement. Imagine if NTA says the people who are suffering from the floods, they can get 40 days or 30 days, but the people who are not suffering from the floods, they should give the exam right now. But there's no point in that, for the very simple reason, once the session starts, it has to start at the same time for everyone. So there is no point. Just a sec, I think Sukhpal Bhai has joined. Just a sec. Sukhpal Bhai, I sent you a request for co-host. Can you hear me? Yeah, Sukhpal Bhai has joined as co-host. The basic idea of the prayer is, even if the NTA or the authority would have thought that they will give the benefit of postponement only to the people who are from the places where the floods are there's no point in that, because for this very simple reason, if a session is supposed to start on a particular date, that has to happen for everyone. So that's why the prayer is about the request for postponing about 4 to 6 weeks for everyone, not just for the people who are suffering from the floods. Before we proceed further, I would like to invite Sukhpal Bhai to brief about today and the prayer as well. Sukhpal Bhai, over to you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Pradeep sir, and welcome Dr. and Professor Ashish Mahendra. Sir, it's an honor and pleasure to have you amongst us. And I also welcome Saurav, Vishwanath, Navneet, and I can see Hirak also and Pratik also. And maybe in due course of time, we'll take your inputs also. First and foremost important, जो सबसे पहले एक important point था जो कि
कोर्ट का मैं लॉग इन मैंने किया था, बट शायद मे बी ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन आई वाज नॉट विजिबल टू प्रदीप भाई। तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर आशीष महेंद्रा ने वो क्लैरिफाई कर दिया दैट हमारे पास समय कम था। इनफैक्ट पहले भी वी हैड ट्राइड अप्रोचिंग द कोर्ट, बट वी वर टोल्ड दैट in case if we move the court would deny and वो reject कर देगा या dismiss कर देगा या whatever reason, and because of that reason people were double minded कि हाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एक तो वो पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो है, जब भी कोर्ट जाते हैं तो एक मैटर आ जाता है फाइनेंशियल्स का कि हाँ फाइनेंशियल्स कहाँ पर आएंगे, बिकॉज कोई भी एडवोकेट है या कुछ भी जब इनिशिएटिव लेते हैं तो एक प्रोफेशनल फी होती है, एक चार्जेस होते हैं, और हमें कोशिश यही रहती है कि हम एक ऐसा एडवोकेट जो है वो चूज करें हु इज वेल वर्थ, हु इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सो आई एम ग्लैड टू शेयर, एंड ऑल्दो प्रदीप भाई एंड डॉक्टर साहब हैड रिफ्यूज्ड कि नहीं सुखपाल जी ये चीज जो है बताने की बात नहीं है, बट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ताकि शायद कोई और इसके लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर रहा हो या कोई और फंड्स नहीं इकट्ठा कर रहा हो। आपको किसी को भी कोई नया 1 रुपया भी नहीं देना। एंटायर जो इसकी फाइनेंशियल है, इसकी फंडिंग है, वो प्रदीप भाई एंड डॉक्टर साहब कर रहे हैं। एंड as a parent, as a guardian, they have come forward and they have said that अभी थोड़ी देर में हम एक ट्वीट भी करेंगे कि कितने, in order to maintain transparency, कि कितने फंड्स की जरूरत थी और इन लोगों ने उसमें से कितना कितना फंड जो है वो दिया। So there should be absolutely clarity कि किसी मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कोई किसी को बोल रहा है कि आपको पिटिशनर को पैसा देना है या किसी को देना है। किसी को कोई पैसा नहीं देना। As a guardian, as elder brother, as a parent, both of them, they have come forward and they have contributed, और उस तरफ से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। And I, on behalf of all the students, all the aspirants, everybody, we would sincerely like to extend our gratitude, thanks to both of them. I understand बहुत सारी बात जो है वो बच्चे नाराज हो जाते हैं या कुछ कई बार जो है वो कुछ कह जाते हैं, बट एनीवेज वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन बिग एक्सटेंडेड फैमिली। और ये जो रोल साइट पे जाएंगे तो उसमें उन्होंने भी क्लैरिफाई किया हुआ है दैट दे कम अंडर दिल्लीज ज्यूरिसडिक्शन। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, दे आर दे हैव फुल पावर। इट इज वेरी मच इन देयर परव्यू दैट वो, क्योंकि एनटीए जो है वो दिल्ली में आता है। इनफैक्ट एनटीए के साथ साथ जो है एनएमसी को भी एक पार्टी बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी एक पार्टी बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी एक पार्टी बनाया गया है। तो ये जो चारों जो है जिनको पार्टीज बनाया गया है, ये चारों के चारों ही दिल्ली में सिचुएटेड है, तो इसलिए वो दिल्ली की परव्यू में आता है। उसके अलावा जो है एडवांस कॉपी, क्योंकि जनरली ये होता है कि सारे जो जितने भी पार्टीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 पार्टीज जो मेरे को पता है जिनको बनाया गया पार्टीज, उनको एडवांस कॉपी सर्व करनी होती है, यानी कि पिटीशन की कॉपी सर्व की जाती है। तो वो कॉपी जो है वो सर्व हो गई है, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, वहां से शायद एनटीए से कुछ रिवर्ट भी आया है। अब एग्जैक्टली क्या रिवर्ट आया है वो एक बार एडवोकेट मैम से डिस्कस करके दैट इज इट वर्थ शेयरिंग और नॉट वर्थ शेयरिंग, वो अगर इफ इट इज वर्थ शेयरिंग दैट वी विल शेयर दैट विद यू, अदरवाइज लेट्स होप कि कल कुछ ना कुछ आ जाए। बाकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन की क्या नीड थी
वो इसलिए था बिकॉज हम सिंस मॉर्निंग से वी वर ट्राइंग आवर रिसोर्सेज, वी डेलिबरेटली डिड नॉट हमने ओपनली इसलिए नहीं सब लोगों को बताया कि हम अपने आप से वो कर रहे थे. उधर डॉक्टर साहब भी जो है, डॉक्टर आशीष मेंद्रा, ही वाज आल्सो ट्राइंग फ्रॉम हिज एंड, प्रदीप भाई भी अपनी तरफ से कर रहे थे, सब जो है, अनुभा मैम भी अपनी अपनी तरफ से सब लगे हुए थे दैट कि कुछ ना कुछ जो है कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिले या कुछ ऐसा मिल पाए कि जिस वजह से हमारा केस जो है वो स्ट्रांग हो जाए. इनफैक्ट एडवोकेट ममता मैम से भी बात हो रही थी तो उन्होंने भी बताया कि दैट शी लिटरली हैड टू पुश फॉर गेटिंग दिस केस लिस्टेड. उसमें ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं होता बिकॉज पैन इंडिया से जो है वो केसेस होते हैं और भी बहुत सारे देयर आर केसेस. इट इज नॉट दैट इजी टू गेट अ केस लिस्टेड और पहले भी उसके ऊपर तैयारी करनी पड़ती है. आई थिंक अराउंड 100-150 पेज की जो है वो पिटीशन तैयार की गई है. उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो क्लियर है कि नहीं है, उसको ऑथेंटिक सही है नहीं है, वो सारा जो है काफी उसमें मेहनत लगती है. तो ऑल ऑफ देम, अनुभा मैम, ममता मैम, दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट. अब सब कुछ हो गया. कल वो हियरिंग है, वो कब होगी वो आइडली जो है वो प्रदीप भाई और डॉक्टर साहब या ममता मैम कोई भी जो है वो अपने एंड से आप लोगों के साथ वो ट्वीट कर देंगे. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि एक पॉइंट पे, क्योंकि जितने भी रिप्रेजेंटेशन सबमिट हुए थे, वट एवर रिप्रेजेंटेशन वी हैड गिवन, I had cross-checked none of the representation because this flood situation and rain and all these things, it just happened recently. So none of our representation, they carried this thing, and we were not having the data of students also. So thanks to the team, सौरभ, नवनीत, विश्वनाथ, जो बाकी लोग हैं, आप लोगों ने मेहनत किया और डेटा भी इकट्ठा किया एंड फाइनली विद दैट डेटा हमने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर दिया. इनफैक्ट उसके बाद हम डीसीपी साहब के ऑफिस भी गए टू टेक परमिशन फॉर अ फिजिकल मीटिंग. वो भी there are a couple of activities which we are doing at the back end which we do not want to disclose at this point of time. जैसे जैसे कुछ उसमें कुछ डेवलपमेंट होगी जो